Yes. Here is worksheet 1. Nikita's sister uses the information given in the box to tell her what her lines say. Complete the information. One example is done for you. If your lifeline is long, you have a long life. If your headline is dark, you are intelligent. If your heartline is dark, you are kind. And if your Neptune line is broken, you have a lot of imagination. If your sun line is clear, you are आएगा बेटा यहाँ, you are successful. If your Mercury line is strong, you have good memory. Okay. And now in the blank space provided below, trace your own hand and draw the lines. It's your activity. You have to draw your own hand and then draw these lines. Neptune line, Mercury line, Sun line, okay? Saturn line, life line, heart line. ये सभी आपने बनानी है according to जैसे अपना पिछले पेज पे दी हुई है. Now worksheet 2. Complete the following sentences. The first one is done as an example. If water is heated to 100 degrees Celsius, it boils. अब यहाँ पे देखिए, इसको हम ज़ीरो कंडीशनल कहते हैं. ये मैंने आपको कल वीडियो में बताया था. ज़ीरो कंडीशनल क्या होते हैं? जिसमें दोनों ही तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है. ठीक है. इफ़ अ प्लांट डज नॉट गेट वाटर, इट ड्राइज. इफ फिश आर टेकन आउट ऑफ वाटर, दे डाई. इफ यू फेस द ईस्ट, द वेस्ट इज बिहाइंड यू. दीज आर द कंडीशनल. अगर आप वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े होंगे तो ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े होंगे तो वेस्ट आपके पीछे होगा. ये तो कंडीशन है और ये ट्रू है. ये वो सेंटेंसेस हैं जो जनरली ट्रू होते हैं. जनरली जो ट्रू होते हैं उसको हम ज़ीरो कंडीशनल कहते हैं. ठीक है. दोनों ही तरफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. इफ़ यू एक्सरसाइज, यू रिमेन फिट. इफ़ यू स्विच ऑन द टेलीविज़न, इट स्टार्ट. अगर आप स्विच करेंगे टेलीविज़न को तो वो स्टार्ट तो होगा ही. इफ़ यू ऐड शुगर टू द टी, इट बिकम स्वीट. ओके. सो दीज आर कॉल्ड ज़ीरो कंडीशनल जो जनरली ट्रू होते हैं. उसके बाद वर्कशीट 3. रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन दैट टुक प्लेस बिटवीन बंटी एंड शिखा. Shikha says, are you going anywhere during the summer vacation? Bunty, we are planning to go to Dalhousie, but I will have to finish my holiday homework in time. Bunty's answer can be written in another way. जो बंटी ने बोला है वो दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं कि we may go to Dalhousie if I finish my holiday homework in time. So इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कंडीशनल. क्योंकि उसने बोला है कि हम तो वैसे तो डलहौजी प्लान कर रहे हैं लेकिन अगर उसके लिए मुझे मेरा पहले होमवर्क फिनिश करना होगा. इट मीन्स कि अगर उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया तो वो डलहौजी जा सकते हैं. तो ये कंडीशनल में चेंज कैसे हुआ? वी मे गो टू डलहौजी इफ़ आई फिनिश माई हॉलीडे होमवर्क इन टाइम. Follow the pattern in the example and write sentences taking ideas given in the table below. First one has been done for you. Suppose here is a table and something is written. I may go to play if. मैं खेलने जा सकता हूँ. अब आपको यहाँ से मैच करना है इसके साथ कौन सा कंडीशनल सूटेबल होगा. ओके. I may go to play if इट स्टॉप्स रेनिंग. फिर आपको ये पूरा सेंटेंस यहाँ लिखना है. आई में और इफ़ सबके अंदर आएगा और ये आपने मैच करना है. ठीक है. आई में गो टू प्ले इफ़ इट स्टॉप्स रेनिंग. देन आई में बाय अ न्यू ड्रेस इफ़ वी गो फॉर शॉपिंग. देन आई में स्टैंड फर्स्ट इन क्लास if
I work hard. I may go to my aunt's house if my mother allows. I may watch TV if I finish my homework. I may play the Casio if we have a musical show. And now you have to write these sentences in the space provided here. And now worksheet 4. Imagine a fairy has just appeared before you. She has granted you 5 wishes. Using the pattern I wish, write your wishes as shown in the example. सपोज करो कि आपके सामने कोई फेयरी आती है, कोई परी आती है और वो आपसे कहती है कि मुझे कि आप मुझसे 5 विश मांग लो, तो आप क्या विश मांगेंगे? तो वो विश कैसे बनानी है आपने? आई विश आई वर गुड एट मैथ्स. अब देखिए, वैसे तो बेटा वर इज़ नॉट यूज्ड इन अ प्रॉपर वे. अगर हम टेंसेस या सेंटेंसेस बनाते हैं तो आई के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, है ना. आई वॉज doing this, okay, I was watching TV, I was playing match, okay. But in these type of conditionals where you wish something, were is used with I, okay. I wish I were good at maths. I wish I were rich. These are wish कि काश में ऐसा होता, काश में ये होता, ठीक है. तो यहाँ पर आपने फेयरी को क्या विश बतानी है? आई विश आई वर अ हीरो. आई विश आई वर अ डॉक्टर. आई विश आई वर अ क्रिकेटर. आई विश आई वर अ बर्ड. आई विश आई वर अ स्पाइडरमैन. ओके. नाउ राइट डाउन वन रीजन फॉर ईच ऑफ द अबोव विशेज. अब आपने जो ऊपर विश डाली हैं उनका आपने यू हैव टू टेल द रीज़न, ओके. इफ़ आई गुड, अब पहली विश आपने इफ़ आई वर गुड एट मैथ्स आई वुड टॉप द क्लास. नाउ सी, मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हम इफ़ के साथ करते हैं, इफ़ प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो दूसरी जगह हम वुड का यूज़ करते हैं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही बताया था. अब यहाँ पर इफ़ के साथ हम वर का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इफ़ प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन वी विल यूज़ व्हाट? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इफ़ आई वर गुड एट मैथ्स आई वुड टॉप द क्लास. वुड टॉप, टॉप is the first form of verb, and would we have used would because there is if plus second form of verb in the first part of this sentence. If I were rich I would go round the world. अगर मैं रिच होता तो मैं राउंड द वर्ल्ड जाता, है ना. हमारे पास बहुत सारे पैसे होते, हम जो नई नई जगह पे घूमते. देन यू विश इफ़ आई वर अ हीरो I would become famous. If I were a doctor, I would treat the poor. If I were a cricketer, I would play for India. If I were a bird, I would fly in the sky. If I were a Spider-Man, I would protect the people. Okay? So ये सारी की सारी चीज़ें आपने अकॉर्डिंग टू द जो कंडीशनल है वो बनाई हैं. वर अगर हो, वर इज़ द सेकेंड फॉर्म. इफ़ के साथ वर लगा हो या कोई भी सेकेंड फॉर्म लगी हो तो हम दूसरे पार्ट में वुड का यूज़ करेंगे. यू गॉट इट? नाउ इट इज़ वर्कशीट 5. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ लोनली जंगल. यू एंड योर फ्रेंड आर लॉस्ट इन इट. This is the picture, and you and your friends are lost in this jungle. Now you have to write some sentences using conditionals. Imagine, what would you do? आप क्या करते if you saw a girl in a ditch? If you saw, अब यहाँ पर देखिए saw क्या है?
वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो दूसरे पार्ट में वुड ही यूज़ होगा, ये ध्यान रखना है। अब पीछे तो आपने वर देखा, तो वर तो सेकेंड फॉर्म है ही। अब ऐसे भी सेकेंड फॉर्म आ सकती हैं, जैसे अ लायन अपीयर्ड बिफोर यू, अपीयर्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑल्सो। सा इज द सेकेंड फॉर्म, यू सा अ वाउंडेड मैन लाइंग ऑन द ग्राउंड, अ बियर अपीयर्ड, डेकोर्ड सराउंडेड यू, you met your class teacher. So these are the second form of verb. So we have to write would with these sentences. If I saw a girl in a ditch, I would help her. Why do we place would? Because there is second form. So ये आपने relationship बनाना है. If a lion appeared before me, I would climb on a tree. Definitely you will climb on a tree. If I saw a wounded man lying on the ground, I would dress her wound. I would dress her wound. ठीक है, wound means उसका जो घाव होता है, ठीक है, चोट जो होती है, तो मैं उसको dress का means उसको पट्टी करता. If a bear appeared, I would run. अब आप उससे लड़ तो सकते नहीं तो भागोगे ही. If a bear appeared, I would run. If dacoits surrounded me, I would fight with them. If I met my class teacher, I would wish her or wish him. Now, read the incomplete sentences given below and complete them in any suitable way. The first one has been done as an example. If ice is kept at normal temperature, it melts. अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था वो ज़ीरो कंडीशनल है जिसके अंदर जनरली जो ट्रू होते हैं और इसमें दोनों तरफ ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड. इफ़ देयर इज़ लाइटनिंग, देयर ऑल्सो इज़ थंडर और रेन. इफ़ salt is added to water, it becomes salty. If a stone is thrown upward, it comes down. If you practice daily, you may become perfect. If you turn off the tap, the water stops coming out. So we can see here in the first part of this sentence, first form is used, and second part also first form is used, just because these are zero conditionals. Now imagine you were in the following situation. What would you do in each of these situations? Use your imagination to complete these sentences in an interesting way. If I were a millionaire, same case, were is the second form, then we will use would. If I were a millionaire, I would help the poor people. These are just imagination, means these are not generally true. आप खुद की थिंकिंग के अकॉर्डिंग इसको बता रहे हैं कि मैं ऐसा, अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता. ओके, इफ आई वेंट टू लिव इन अनदर कंट्री, अगेन इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन वी विल यूज वुड. आई वुड लर्न दियर लैंग्वेजेस. इफ आई बिकेम इनविजिबल, अगेन second form, then we will use would. If I became invisible, I would help the police. If my friend gets into trouble, I will help him. If I lose all my money, I will inform my parents. तो मैं मेरे पेरेंट्स को बताता. जो भी आपकी इमेजिनेशन हो वो यहाँ आप लिख सकते हैं. ओके, एंड नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक दैम इंटरेस्टिंग. आई वुड जंप विद जॉय. अब देखिए यहाँ पर इसने वुड लगा दिया, तो हमें खुद को समझना है कि सेकेंड पार्ट में हम क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे. अगर वुड लगा है तो हम सेकेंड फॉर्म ही लगाएंगे. आई वुड जंप विद जॉय, मैं खुशी से झूमता. इफ़ आई गॉट फर्स्ट प्राइज, अगर मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलता. आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ये सेंटेंस बना सकते हैं. मैं खुशी से झूमता, अगर मुझे साइकिल मिल जाती, इफ़ आई गॉट अ साइकिल, इफ़ आई गॉट दिस और दैट, वट एवर you think you can write here. What will you do if
I tell you. Will. Now, if there is will is written in one part of the sentence, then in second part we will use first form of verb. What will you do if I tell you that you have won the match? In last question mark is here. So कि तुम क्या करते अगर मैं तुम्हें बताता कि तुम मैच जीत गए हो, ठीक है, करोगे, क्या करोगे? तो विल है तो यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई हैव. वी वुड ऑल बी वेरी इल. अब वुड फिर से वही सेकेंड फॉर्म लगाएंगे. इफ वी एट जंक फूड. विल यू हेल्प मी? अगेन विल, देन वी विल use first form and am is first form. Will you help me if I am in trouble? Our teacher will be angry if we fight in the class. So your chapter is completed and now you have to write these sentences in your practice book. Till then, bye bye.